So bachcho, let's read the question, and the question says osmosis take place between two solutions separated by semi-permeable membrane because we have four options here. First option is water molecule move from the more diluted solution to the less dilute solution. Second is solute molecule move from the less dilute solution to the more dilute solution. Third statement is water molecule move from the less dilute solution to the more dilute solution. And the last statement is solute molecule move from the more dilute solution to the less dilute solution. Our key concept here is, our key concept for this question is osmosis. Osmosis. First, we should know what is osmosis. Osmosis is a passive process. Passive process जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा ट्रेवल करते हैं. मॉलिक्यूल और वाटर ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मेम्ब्रेन. और ये ट्रांसपोर्ट हमेशा मोर डाइल्यूट सोल्यूशन से लेस डाइल्यूट सोल्यूशन की ओर होता है. मोर डाइल्यूट सोल्यूशन टू more dilute to less dilute. So water travel करता है more dilute to less dilute. Our right answer for this question will be option A. Water molecule move from more dilute solution to the less dilute solution. Water molecule ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन से कम डाइल्यूट सोल्यूशन की ओर मूव करते हैं. सो आवर राइट आंसर विल बी स्टेटमेंट ए. I hope you guys understand the concept. Best of luck.